तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दिया कि इस बार का बोर्ड स्पेशल होगा। 35 मार्क्स थ्योरी एंड 15 मार्क्स प्रैक्टिकल्स। 50% फर्स्ट टर्म में होगा और 50% सेकेंड टर्म में होगा। सेकेंड टर्म में कंडीशन से फेवरेबल रहेंगी तो बोर्ड एग्जाम होंगे। सिलेबस आपका एज यूजुअल है। एज यूजुअल का मतलब लाइक प्रीवियस ईयर नॉट ईयर्स। मीन्स थोड़ा सा सिलेबस आपका कम है नॉर्मल पीरियड से। इन क्लास 12 फर्स्ट यूनिट हैज 4 chapters: reproduction in organisms, reproduction in flowering plants, human reproduction, and reproductive health. Whatever you have studied in chapter 1, elaboration of the fundamental methods, that is the process of reproduction, have been discussed in the case of plants and human beings. In previous class, we have studied about fertilization in human. Human fertilization में हमने देखा था human fertilization। इसमें हम लोगों ने देखा था egg is normotype produced by the ovary, which comes into the fallopian tube. If sperm is available, fertilization takes place at ampullary ischemic junction. फर्टिलाइजेशन कैसे होता है जस्ट रिमाइंड करो कि सेकेंडरी ओवोसाइट जो है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जोना पेलुसिडा। जब स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो एक्रोजोम से एंजाइम्स निकलते हैं जिसके कारण स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर पाता है एंड स्पर्म कम्स इन प्री-विटेलाइन स्पेस and makes contact with the plasma membrane of oocyte. Now, nucleus of sperm together with proximal centriole of neck enters into the cytoplasm of secondary oocyte. As soon as male nucleus enters into the secondary oocyte, meiosis second is completed. Hence, oocyte and second polar body are formed. Second polar body gradually degenerates as it has no maternal cytoplasm. Now, nucleus of male gamete and female gamete both fuse. Syngamy takes place and zygote is formed. आपने देखा था जाइगोट बन गया था
This is the zygote. This is not diploid. This is zygote. This is diploid. And this outer layer is dona pellucida. So zygote is formed in the fallopian tube just at the site of fertilization. Zygote. Now, from zygote, embryo is to be formed. Embryo बनेगा ना? Embryo is multicellular. It means zygote में क्या होगा? Division होगा. And that division is called cleavage division. This is the zygote. So now there will be embryogeny, means development of embryo. Zygote से क्या बन जाएगा बेटा? Zygote will develop into embryo by the process called embryogeny or embryogenesis. Right? What else? I have already discussed. This cell, zygote divides. Zygote divides to form two cells. Two cells. Zygote divides to form two cells. These cells are known as blastomeres. Blastomeres, which in turn again divides to form three cells, then four cells. So gradually the number of cells increases, and the pre-embryo, means initial stage of embryo, gradually moves towards the uterus through the fallopian tube. ये इवेंट fallopian tube में हो रहा है. तो जाइगोट से 2 से बना, 2 से 4, 8, 16, 32, 32. तो जब तक ये लेटस दिस इज योर ये बन गया, आपको ये 4 सेल स्टेज हो गया, ये 4 सेल स्टेज हो गया. What we see that dona pellucida is intact, hence the size of the product is equal to the size of the zygote, but the number of cells are more, as zygote is single cell structure. So number of blastomeres are gradually increasing, and as soon as it gains the 16 to 13 cell stage, 16 to 32 cell stage, 16 to 32 cell stage, then it will fall into the uterus. Right? अब ये यूटेरस में चला जाएगा कितने स्टेज पर? 16 to 32 सेल्स का जब स्टेज आएगा, यानी ब्लास्टोमियर्स की संख्या जब 16 और 32 के बीच आएगा तो कहाँ चला जाएगा? यूटेरस में चला जाएगा. इस स्टेज को हमने क्या कहा? मोरुला. दिस स्टेज इज नॉट एज द मोरुला. सो मोरुला में सेल्स की संख्या 16 to 32 हो सकती है मैक्सिमम. सेल्स को ब्लास्टोमियर कहें. Now, what will happen in uterus? Uterus में जाते ही क्या होगा? There will be rearrangement of the cells, and an outer layer of cells will be formed with a space in between, and other cells, remaining cells, will collect to form a cell mass. Clear? So what will happen now? This is your dona pellucida, and inside the dona pellucida, what will happen? Now cells जो है वो अरेंज होंगे और एक आउटर लेयर बनेगा सेल का,
will collect at one pole, that is known as the cell mass or inner cell mass, and the cavity is called blastocele. This structure is called blastocyst. This structure is called blastocyst. In which blastocele is present, there is inner cell mass and trophoblast. Inner cell mass will take part in the development of the body of the fetus. Right? So, body, tissue, organ, all will be formed in course of time with the help of inner cell mass and trophoblast. Trophoblast tends to attach the endometrium of uterus. क्लियर? अब क्या होगा देखिए, साइज अभी तक बढ़ा नहीं है क्योंकि जो ना पेलुसिडा अभी भी है। व्हाट विल नाउ हैपन? अब क्या होगा बताया था आपको कि ट्रोफोब्लास्ट से कुछ एंजाइम निकलेंगे। ट्रोफोब्लास्ट से क्या होगा, कुछ एंजाइम निकलेंगे और ये जो ना पेलुसिडा है उसमें गैप क्रिएट हो जाएगा। This structure now moves, ये जो स्ट्रक्चर है ये मूव कर जाएगा out of the zona pellucida, means now this is free to expand and form the embryonic structure. अब जो है ये बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा। तो यूटेरस का जो वॉल है उसके कांटेक्ट में जाएगा। सो नाउ लेट अस, दिस इज द यूटेरस का, यूटेरस मान लो ये यूटेरस है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज योर यूटेरस, दिस इज यूटेरस। सो यूटेरस में पेरीमेट्रियम के बाद है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के बाद क्या है, एंडोमेट्रियम। दिस इज पेरीमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसमें भी यही है, उसी का पार्ट है ना, यूटेरस ये है ना, राइट? सो व्हाट वी सी, दिस स्ट्रक्चर इज इन द यूटेरस। ये कहां पर है, यूटेरस में है। ठीक है, द आउटर लेयर इज व्हाट, ट्रोफोब्लास्ट, right? And collection of cells, inner cell mass. This is the blastocyst. अब क्या होगा, अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो है it will be phagocytic. It will break the uppermost layer of endometrium. ये एंडोमेट्रियम को phagocytize करेगा, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस ब्लास्टोसिस्ट
Clear? Now, this endometrium may be called as decidua. So, the thin layer present between blastocyst and myometrium is called decidua basalis. The regenerated layer, which will break later on during the development of the fetus, is called decidua capsularis, and other part of the endometrium is called decidua perietalis. So decidua basalis, decidua capsularis, and the remaining endometrial tissue is called decidua perietalis. Right? Simply, it is nothing but endometrial tissue called decidua. Decidua उसी को कहते हैं. So what do we see? ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया. मैं ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है थिन बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम, it will form placenta together with the chorion and allantois. Chorion and allantois part of the developing embryo. बात समझ में आ रही है मेरी? मैंने क्या कहा? देखो, ये मैंने कहा कि एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, यहाँ एंडोमेट्रियम है. एंडोमेट्रियम का थोड़ा सा लेयर बच गया है. क्यों? कि ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आ गया. बाकी जगह तो एंडोमेट्रियम है, लेकिन जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आया वहाँ पर एंडोमेट्रियम जो है ब्लास्टोसिस्ट और मायोमेट्रियम के बीच जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, बाकी जगह पर एंडोमेट्रियम पूरा है. इस पॉइंट पर एंडोमेट्रियम कम है, थिन है. decidua basalis जिसको कहा था, it will form placenta. It will be the part of placenta. And ये ब्लास्टोसिस्ट का मैंने कहा था कि ये इनर सेल मास है. इनर सेल मास से तो फीटस का बॉडी बनेगा. ये जो ट्रोफोएक्टोडर्म है, ट्रोफोएक्टोडर्म जो है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाता है. दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई. ठीक है ना? ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ट्रोफोब्लास्ट है. ट्रोफोब्लास्ट है. ये ट्रोफोब्लास्ट कहाँ है? यहाँ तो एंडोमेट्रियम के अंदर है ना. ये तो पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर शिफ्ट किया हुआ है. तो ये जो इसका आउटरमोस्ट लेयर है, इट विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये क्या बनाएगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा. दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई. कोरियोनिक विलाई. And this chorionic villi with the decidua basalis, right? अब इसके कॉन्टेक्ट में कौन आएगा? decidua basalis आएगा. decidua basalis is the maternal part. decidua basalis is maternal tissue, and chorionic villi develop from blastocyst. So these two interdigitate. देख रहे हैं ना, उलझा हुआ है एक दूसरे के पास. And become the part of placenta. Although, हालांकि एक और स्ट्रक्चर जो ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट होता है, that is allantois.
अलंटॉइस इसका पार्ट होता है, इसका एम्ब्रायोनिक पार्ट होता है, आगे बताएंगे आपको। सो कोरियन, अलंटॉइस and decidua basalis of maternal tissue together forms placenta. Placenta कैसे बना समझे? So human placenta is known as chorioallantoid placenta. chorioallantoid placenta. कोरियन और allantois इसमें भाग लेता है, समझे ना? Human placenta is also known as hemochorial placenta. ठीक है? प्लेसेंटा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उतना पर हम अभी नहीं जाएंगे। आप इतना समझिए कि ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है दैट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा। मीन्स कोरियन जो होता है वह मैटरनल ब्लड के पास होता है, कॉन्टेक्ट में होता है। कोरियन इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, कोरियोनिक विलाय उसी का प्रोजेक्शन है। एंड दूसरा नाम दिया कोरियोअलंटोइक प्लेसेंटा, मतलब कोरियन और अलंटोइस दोनों मिलकर के प्लेसेंटा बनाता है फ्रॉम फीटल साइड, एम्ब्रायोनिक साइड। एम्ब्रायो का जो पार्ट होता है कोरियन और अलंटोइस वह प्लेसेंटा बनाता है, और मैटरनल टिश्यू का जो पार्ट होता है वह होता है डेसिडुआ बेसालिस। एंड यू नो दैट प्लेसेंटा is an important structure through which there is exchange of needed substances from mother and fetus. Mother and developing embryo. Embryo gets oxygen, hormones, all the nutrients from the mother for the development through placenta. Maternal blood never enters into the fetal tissue. आप देख रहे हैं प्लेसेंटा जो है उसको ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता। कोरियन है, कोरियन के बाद मैटरनल टिश्यू है, but exchange of substances takes place. Needed substances enter from mother to the developing embryo, and waste are thrown out in the same way from developing embryo to the maternal tissue, right? तो कैसे होगा अटैचमेंट, समझ में आया? दिस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into the uterine endometrium is called implantation. Implantation का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the uterine endometrium is called implantation, and implantation is the beginning of pregnancy. ना एक बात और ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा था कि कॉर्पस ल्यूटम जो है वह प्रोजेस्टेरोन बनाता है, एस्ट्रोजन भी बनाता है, एंड प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर maintenance of endometrial lining, otherwise endometrium will break. menstruation हम लोगों ने पढ़ा है, so progesterone level must be high. Clear? Progesterone will be secreted in due course of
प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, नो डाउट, बट as soon as implantation takes place, the maternal part of the developing placenta, that is the decidua basalis, releases HCG. HCG निकलेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरियोन के बगल में जो टिश्यू है उससे क्या निकला? HCG। एंड दिस HCG जो है वह कॉर्पस ल्यूटम को डिजेनरेट नहीं होने देगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी जब तक है तब तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग शुड नॉट बी ब्रोकन, राइट? तो इम्प्लांटेशन आप समझ गए। अब चलिए हम थोड़ी सी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात करें।